A very good morning to all my dear students. Today we are here with our new topic, that is report writing. Here the report writing means the factual description of the events. It should be in the chronological order, or the chronological order means the step by step description of an event. And it should always be written in the past tense. But before all these things, we are going to discuss what is the report writing. Here, what is the report writing? In the previous video, we have just already meant what is the report writing. And who is the person who writing the report? Is the reporter himself, who is just giving the report over an incident. Now, why do we write the reports? It is just to describe the things and events. And the second point here describe that we read them out to find out information. Yes, written report just give us the information, and not only the information, it also give information to others, and it is for keep it for the future use. Now, how many types of reports are there? Reports for newspaper and reports for magazine. Here is the marking scheme of the report writing. For example, here heading and reporter name will conclude of the 1 mark only. Then we conclude the report content of the 4 mark, and here these two sentences conclude in under the expressions. So expression conclude the grammar and spelling, which contain 2.5 marks, and expression also contain the relevance and the coherence of the style, which is of the 2.5 marks also. So all of these conclude. If we'll add all these things, then we will find that it is of the 10 mark. Now, here is the format of the newspaper. Remember one thing, students, there are the two different formats for the report writing, for the difference of the newspaper report and the magazine reports. In the newspaper reports, we usually write the heading, right, and by line 2, and also date and place. And here we have also the opening paragraph, account of the event, and then conclusion. But what we don't have in the magazine report is that we don't have the date and place. We have heading like the newspaper report, we have just byline like the newspaper report, opening paragraph like that, and account of the event and the conclusion. But what we don't have, that is time, date and place. But here is one thing that you can conclude, that is date. आप यहाँ पे date लिख सकते हो, but you will not mention the place. You can find the difference between these two formats. What are the main differences? That the date and place. Whenever you find in the question that it is a magazine report, or it is a newsletter report, or it is a newspaper report, whatever be that, then you have to follow the different format for these two. I hope that you have understood what I have just mean to be the difference between the newsletter report and the magazine, school magazine report. Both of the newspaper and the magazine reports can be concluded with the two types of report. अगर मैं इन शॉर्ट और बहुत ही आसान एक लैंग्वेज में कहूँ कि न्यूज़पेपर और मैगज़ीन रिपोर्ट भी किसी न किसी टाइप में फर्दर डिवाइड हो सकते हैं, तो वो ये है. वन इज़ गुड इवेंट रिपोर्ट, जिसमें हम प्रोग्राम्स, कोई भी प्रोग्राम हो, फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन है, एनुअल डे फंक्शंस हैं, कोई प्रोग्राम है लाइक ब्लड डोनेशन कैंप है, सेव वाटर कैंपेन है, या फिर कोई इवेंट है, कोई पार्टी है, एनीथिंग विच हैज हैपेंड फॉर द गुडनेस, that is come under the good event report. The another thing which we just divide newspaper and magazine reports is that the bad incident report. Bad incident report cover करता है रोड एक्सीडेंट, फ्लड्स, एनी डिस्ट्रैक्शंस जिसमें हमारा नुकसान होता है. नाउ आप इस बारे में समझ चुके होंगे कि किस तरीके से हमारी दो फर्दर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स रिपोर्ट्स फर्दर कंक्लूड की जा सकती हैं. नाउ इन द नेक्स्ट, in the previous slide we have just come to know that there are two types of report, good and bad. Bad is accidental reports. Bad doesn't mean that these are bad by their format. No, they are bad because they brings the bad news. And here the program events which are concluding under the good report because it contain the good news. And also here we find that the accidental reports need 6 of the things, mainly 6 of the things in itself, as it will also conclude what
where and when. For example, if we will take the example here, the road accident, which is also an example from the bad incident report, then we have to give answer the following 6 points. What happened, where happened, and when happened, then how many killed and how many injured, and detail of the rescue. Rescue means होता है बचाव. फॉर एग्ज़ाम्पल रोड एक्सीडेंट में किसी भी बचाव दल का कोई भी व्यक्ति आया या फिर पूरा बचाव दल आया. फॉर एग्ज़ाम्पल द ITBP पुलिस कम फॉर द रेस्क्यू फॉर द फ्लड और फॉर द रोड एक्सीडेंट बिकॉज इट वॉज अ बैड वन. एंड उनको बाद में हॉस्पिटलाइज कैसे किया गया, कितने लोग मरे, कैसे रहे, कैसे कंक्लूज़न. और आप इन रोड एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए इन द कंक्लूज़न में आप क्या दे सकते हो, रिकमेंडेशंस दे सकते हो. एंड हियर वी मूविंग टुवर्ड्स द प्रोग्राम रिपोर्ट. इसमें भी हमारे एक्सीडेंटल रिपोर्ट्स की तरह व्हाट, वेयर एंड व्हेन का हमें जवाब देना होता है. बट इसमें क्या चीज़ है, द टाइम एंड वेन्यू शुड बी देयर. एंड इफ़ necessary then we have to give the introduction of the chief guest, who has done the inauguration, who has done the speech, and who has given the prize distribution. All these things and all these points has been divided with the for the two different types of report, that is accidental and program event reports. Moving towards the next slide, we must include in the reports, these are the things. So reports are the specification of the big incident into a brief manner. इट मीन्स एक बड़ा इंसिडेंट हुआ है, कोई बड़ा इवेंट हुआ है, हमें उसको एक छोटे से पैराग्राफ, विद इन 3 पैराग्राफ में हम उसको क्या करेंगे, एक स्पेसिफिकेशंस के साथ प्रेजेंट करेंगे. इसका सेकंड पॉइंट हमें बताता है कि एक लॉजिकल और ऑर्डर में होनी चाहिए. जब जैसे स्टार्ट होता है, फॉर एग्जांपल कोई भी एनुअल डे है वो स्टार्ट होता है, सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि वो किसने ऑर्गेनाइज़ किया है, कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है, कब और कितनी तारीख को ऑर्गेनाइज़ किया गया है. देन आप बताओगे कि वो कब शुरू हुआ, सुबह 9 बजे शुरू हुआ, 10 बजे शुरू हुआ, एंड ख़त्म कब हुआ, टिल 5 PM और 6 PM, राइट. देन यू हैव टू गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग वॉलेंटियर्स, की वॉलेंटियर्स ने किस तरीके से उसमें पार्टिसिपेशन किया, और आप बताएंगे कि क्यों हमने ये एनुअल डे फंक्शन रखा, जस्ट टू इनक्रेज द चिल्ड्रन. Now in the third point here we have the appropriate conclusion should be made if needed according to the report. कई रिपोर्ट्स में कंक्लूजन ज़रूरी नहीं होता, बट यू हैव टू गिव द एग्जैक्ट एंड फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन. आपको कोई भी अपनी ओर से कोई भी लिंक अप चीज़ इसमें नहीं डालनी. यू आर नॉट हियर अलाउड टू यूज़ द इमेजिनरी थिंग्स विच जस्ट क्रिएटेड बाय योर ओन माइंड. नो, डू नॉट डू दिस. एंड देन वर्ड लिमिट, यहाँ पे जो वर्ड लिमिट है वो क्या है, 150 to 200 वर्ड्स. मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ यहाँ पे, अगर आप रिपोर्ट राइटिंग कंटेन ऑफ द 10 marks, right, then you have to write the 150 to 200. But if it will contain of the 8 mark, then you have to give within the 100 to 150 words. For now let's move towards the next slide. There are some tips that will make our report so easy and so comfort to read by the readers. Here the first tip is that language should be easy, so that everyone can easily understood this. Write in paragraph. Remember students, whether it is article, report, notice, what I said, or the unseen passage, it should always written in the paragraph, and then make a rough draft of the important points you are going to include. Then you have to make small sentences. Do not go for the big sentences, because you are not going to explain anything. So you have to report the point to point things, right? Then highlight the important points. It should also include what, when and where. We have already been discussed all these things. Let's move towards the next thing. That most important thing is that we have to return the right report in the past tense. Then we will not use the first person. For example, I, we, and we will also not use the second person narration, that is you. And we have to write in the third point, that is indirect speech. It means you have to say that the victim means the person who has just come under the accident or who has just suffered with that accident. So if you have taking a kind of report, or you're reporting from somewhere, then you have asked a question of the victim, then you have to use the indirect speech.
Indirect speech will include, for example, that the victim said that. You will not say he said, then put the inverted commas, then the real exactly things. You will indirect speech, right? He said that. Now here is the fourth point, that is passive voice. Passive voice I we have already done. जिस लाइन में बाय होता है, that means subject plus was third form plus was verb plus will include sorry, here is the subject plus was verb plus was third form plus by plus then object. हमने ये सब किया है वॉइसेस के टाइम पे, तो आप समझ सकते हैं कि वॉइस पैसिव वॉइस कौन सी हमें यूज़ कर रही है, जिसमें हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर उसको बाय टू द सब्जेक्ट करना है, राइट. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट लाइन. Here we have the news report which concluding all these things. We have already been discussed all these things, but I want to cut one thing, that is photo. There is no need of this thing. So now let's move towards the next slide. So what do you mean the byline? In the previous video we have just seen we need a headline. We need a headline, a byline, a place line, a leading paragraph and body paragraph and quotations. Now what do you mean by the byline? Byline is the name of your, which is given in the question. You will not put your own name whether it has not been asked. And in the if you will not find any kind of name in the question, then you have to write XYZ. Then what is the place line? Place line is the place where the report was written, and the place the report was written depends on where the incident took place, right? So now here we have some of the format. Here is the bad incident report format, newspaper format. Here we can say these are not the magazine reports. Then you have to say give the heading. A catchy heading should be there. Then in the right hand corner you have to mention the reported by and the name or the designation which you have just given in the question. In the left hand you have to place two things, that is the place and place and date. And place and date will come in the newspaper report, not in the magazine, right? So in the body of the very newspaper report include that the first line will give the answer of these four: what, who, when and where. And the second line of the first introductory part will give you the answer of why. And the third line will tell you people, how many died and how many injured. And the main content in the main paragraph, in the middle paragraph, we have to conclude how exactly the incident took place. And then finally we have to conclude all these things with our recommendations and also the suggestions which we can make in the current situation. Now here we have the example in the next slide regarding the bad accidental report. That is, a road accident took place on the SG highway in Ahmedabad, and write a report in the about 200 words covering the accident as a reporter of the Indian Express. Yes, you are the reporter here, and there is no name has been given. So what we will write here, we'll see in the next slide. Here we have to make our heading. Sometime it has been given, but if it has not been given, then you have to make it so catchy and eye catchy according to the reader. Here we have just done 3 died in the road accident at SG highway. Then remember one thing, student, the each letter of the each word in the heading should be capital, right? Then in the right hand corner we haven't given any name, and but we are the reporter, so we have to report it by XYZ, reporter of Times of India or whatever the name of the newspaper. In the left hand corner we have to mention the Ahmedabad and 18th March 2020. One more thing students, सिर्फ यही फॉर्मेट नहीं है कि आप लेफ्ट साइड में आप प्लेस और डेट डालें. एक फॉर्मेट और है जो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप अपने प्लेस और डेट को किस तरीके से अलग तरीके से मेंशन कर सकते हो. तो अब आपको यहाँ पे मेनली 3 पैराग्राफ्स दिखाई दे रहे हैं, और 3 पैराग्राफ्स में आपको बिल्कुल इसी तरीके से चीज़ें मिलेंगी. जैसे फर्स्ट लाइन में आपको व्हाट, हु एंड व्हेन का आंसर मिलेगा, देन वाई का, देन उसके बाद कितने आदमी इंजर्ड हुए, कितने मरे. देन जो मिडल पैराग्राफ होगा उसमें आपको इस चीज़ का आंसर मिलेगा कि वो इंसिडेंट किस तरीके से हुआ.
और थर्ड में आपको समराइजेशन मिलेगी उस इंसिडेंट की, हम क्या रिकमेंडेशन करते हैं। सो आप इसे पढ़िए और आपको पता चलेगा हाउ वी कैन कन्फाइन विद ऑल दी 3 पैराग्राफ्स रिगार्डिंग टू द बैड इंसिडेंट रिपोर्ट. Now we are moving towards the next report, that is good event report format. It is also for the newspaper report. So here is the heading, the same pattern like the previous one. Place and date are also the same. Report and reported by in the right hand corner is the also same. But what we have to write in this, in the body of this very event report, is something different. We have the first line is that what, who, where and when. It is already same in the like the previous one. And here is the why, it is also same in the previous one. But in the third line, here is third line says the volunteers participation. Volunteers participation means the students participation. For example, देर इज़ ए एनुअल डे प्रोग्राम, देन आप उसमें लिखोगे कि किस किस बच्चे ने किस तरीके से एंथुजियाज्म से पार्टिसिपेशन किया था, या फिर कितने चीयरफुल तरीके से पार्टिसिपेशन किया था. और वॉलंटियर्स होते हैं मेनली वो पर्सन जो किसी संस्था से बिलोंग नहीं होते, बट दे यूजुअली डू समथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, राइट. सो यहाँ वॉलंटियर्स हम ब्लड डोनेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं. सो और फिर नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा शुरू होगा मेन कंटेंट से. हम इस कंटेंट में लिखेंगे हाउ द इवेंट स्टार्टेड एंड व्हाट व्हेन हाइलाइट्स ऑफ द इवेंट्स. हमारे इवेंट कैसे स्टार्ट हुआ और इस इवेंट की हाइलाइट्स क्या थी. एंड इन द लास्ट ऑफ द पैराग्राफ हम क्या लिखेंगे, समराइज द एंड ऑफ द इवेंट्स विद द पॉजिटिव नोट. रिमेंबर वन थिंग, एवरीथिंग शुड बी इन द एंड शुड बी पॉजिटिव. Now here is the example of this very format, that is a good event format of the newspaper report. Here is the given that Red Cross Society organized a blood donation camp. Blood donation camp is also a good work and good news for us in the TCS Gandhinagar for its employees. Write a report in the 200 words covering the events as a reporter of the Times of India. अब मैं आपको अगर इन शॉर्ट वर्ड से ये बताऊँ तो एक TCS कंपनी है, उसने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने वर्कर्स के लिए रेड सोसाइटी की तरफ से एक ब्लड डोनेशन कैंप लगवाया है, जो कहाँ है, गांधीनगर में है. आपको एक रिपोर्टर जो टाइम्स ऑफ इंडिया का है होने के नाते आपको क्या लिखना है, 200 वर्ड्स में एक रिपोर्ट तैयार करनी है. नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड आपको यही सब मिलेगा. आपको एक कैची सी हाइडिंग मिल रही है, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप एट TCS रिपोर्टेड बाई XYZ, बिकॉज द रिपोर्टर का नाम वहाँ दिया नहीं गया था. TOI यहाँ पे है टाइम्स ऑफ इंडिया. प्लेस क्या है, गांधीनगर, जो हमें ऑलरेडी गिवन था. नाउ हियर इज द 14 मार्च 2020 इज द डेट जो हमें ऑलरेडी गिवन है. नो गिवन नहीं है, बट सॉरी, जो डेट है वो आपको आज की ही डालनी होगी जब आप रिपोर्ट लिख रहे हो. बट आप जब वो इंसिडेंट हुआ था, वो इवेंट कब ऑर्गेनाइज किया गया था, आप उसकी डेट अलग डालोगे, क्योंकि वो इंसिडेंट या इवेंट पहले हो चुका होता है. फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर जो डेट डाली है वो आज की है, मतलब जिस दिन आप रिपोर्ट लिख रहे हैं. और जो डोनेशन कैंप हुआ होगा वो पहले कहीं कब पहले किसी डेट में हुआ होगा, तो हम पहली लाइन में क्या डालेंगे, क्या हुआ था, ए ब्लड डोनेशन कैंप हुआ था. किसने, हु ऑर्गेनाइज दिस, रेड सोसाइटी जो है उसने ऑर्गेनाइज किया था. कब, व्हेन, उसने किया था 10 मार्च 2020 को. और कब से कब तक, 10 बजे से 5 बजे तक. और कहाँ, TCS गांधीनगर में. और वाई, इन द सेकेंड लाइन हम आंसर पढ़ रहे हैं, द मेन पर्पज ऑफ दिस इवेंट वॉज टू क्रिएट द अवेयरनेस रिगार्डिंग द रेगुलर ब्लड डोनेशन अमंग द एम्प्लॉयज़. कारण क्या था, क्यों हमने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करवाया, क्योंकि हम अवेयरनेस फैलाना चाहते थे कि ब्लड डोनेशन से एम्प्लॉयज़ करें और उनका रेगुलर ब्लड सर्कुलेशन कितना अच्छा हो जाएगा. And the second, in the third line of the first paragraph, we conclude that it was very well planned camp and many employees voluntarily participate in the noble cause. और इसमें हमें पता चलता है कि किस तरीके से कैंप को प्लान किया गया और एम्प्लॉयज़ ने कितने अच्छे तरीके से अपने वॉलंटियरशिप को निभाया और पार्टिसिपेट किया इस नोबल कॉज में. उससे नेक्स्ट आपको बताना है व्हाट, हाउ you have just managed and what has the high notes of this very event. आप इसमें देखेंगे, आप इसमें किसी ऐसे पर्टिकुलर बंदे का नाम भी डालकर डिनोट कर सकते हैं, but you will not use the first person narration and the second person narration to denote all these things.
but in the end you will conclude all these things with the positive notes. Now we are moving towards the next slide. Here is some of the another things, that is sample question answers. Here the name has been given. In the previous two slides the name was not given. यहाँ आपको नाम दिया गया है अदिति भारद्वाज, जो क्या है, स्टाफ रिपोर्टर है एक न्यूज़पेपर की, एंड उसने एक एक्सीडेंट देखा है हाईवे पे, उसको कवर करना है अपने न्यूज़पेपर में उस एक्सीडेंट को विद इन 150 to 200 वर्ड्स. ओके, जो एक्सीडेंट हुआ है वो किसके बीच में हुआ है, बस और कार के बीच में. नाउ वी विल राइट इट एज हियर. मैंने आपको बोला था कि अगर आप दो तरीके से, आप दो नहीं बल्कि तीन तरीके से आप अपनी प्लेस एंड डेट को चेंज कर सकते हैं. पहला जो हमने प्रीवियस 2 स्लाइड्स में किया है और जो हम इस स्लाइड में करने वाले हैं वो ये है कि हमने प्लेस और डेट दोनों ही साथ डाले हैं, हमने ऊपर और नीचे नहीं डाले हैं, राइट. बट आपको मैं सही बताऊं तो सबसे ज़्यादा फॉर्मेट दो ही हैं. वन इज़ द जो हमने कर लिया है और एक ये है जो हम करने वाले हैं, बट ये भी गलत नहीं है. सो अब हमने इस जो एग्ज़ाम्पल हमने अभी लिया था इसके अकॉर्डिंग हमें सारी जो डिटेल्स हैं वो मिल चुकी हैं कि हमारा एक्सीडेंट हुआ था और हम कौन है, अदिति भारद्वाज है. तो हम अपनी चीज़ें कैसे मेंशन करेंगे, we will mention here like this. Here is the heading, here is the by reporter Aditi Bhardwaj, here is the date and place, and these are the conclusion points, when, where and why, and how the old passenger were died or not. And here is the second page of this very report, and then it will also conclude with the middle paragraph, and the final paragraph here conclude that how can we compensate for the injured, how the things has been happened in the end. Okay, you have to conclude all these things in the conclusion. And the next, this is the question which has just come in the CBSE 2014. Here the CBSE 2014, this question has been came, and you have to write a report. Here just given that you are the Krishna and Krishna. Krishan and Krishna, two names has been given. Whether you are girl or boy, these are the choice for you. And you are an active participant of the flood relief program. So this is the report writing according on the flood relief measures. Measures means the steps. कि एक फ्लड आने के बाद किस तरीके से स्टेप्स लिए गए, आपको उस प्रोग्राम पे एक रिपोर्ट तैयार करनी है. So here is the example of some of the newspaper reports that you found the terrible accident, driver killed by staff. Now मैंने आपको एक चीज़ और बोली थी कि आप किस तरीके से प्लेस और डेट लिख सकते हैं, वो ये है. हमने जो प्रीवियस स्लाइड्स थी फॉर एग्जाम्पल हियर आई विल टुक यू हियर, हमने यहाँ लिखा था इन द जस्ट द लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द पेज. बट हम अब क्या करेंगे, हम इसी चीज़ को लिखेंगे ऐसे ही, बट इस चीज़ को कहाँ डाल देंगे, इस लाइन के जस्ट पहले. नाउ जस्ट सी, हम इसको किस तरीके से इन्वॉल्व करेंगे, हम करेंगे इसको इस तरीके से इन्वॉल्व. हियर द थिंग हैज़ बीन गिवन, Chandigarh is the place, and May 16, 2020, whatever be that with the date. So you can conclude all these things here, place and date here, place and date here, and then semicolon, and then proceed with your whole. Here is the another example of the report writing. These are the two further example for the report writing regarding the newspaper. You have to read all these report and conclude what kind of report and how it can be written with the same and the common format which has prevailed all over the report writing of newspaper. We are moving towards now the school magazine report. Now आपको मैंने पहले ही बताया था कि हम इसमें क्या नहीं लिखते हैं, हम इसमें डेट या प्लेस नहीं लिखते हैं, बट डेट हम मेंशन कर सकते हैं. सो यहाँ पर क्या है, ABC इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड ग्रीन ड्राइव. हमने पेड़ पौधे लगाने का एक हरियाली वाला जो अभियान है, ग्रीन ड्राइव है, वो एक ऑर्गेनाइज किया है. वो कौन सा स्कूल है, ABC इंटरनेशनल स्कूल. हम इसमें प्लेस का नाम इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि हमारे स्कूल का नाम हमें ऑलरेडी पता होता है और जगह हम ऑलरेडी वहीं लिख रहे होते हैं जहाँ हमारा स्कूल होता है.
इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ राइट हैंड कॉर्नर में क्या लिखेंगे, बाय, रिपोर्टेड बाय, एंड द नेम, डेट ऑफ द sorry, here we have, what do we have to conclude this. If we can skip, then we have to know what the Pune March 7 and the ABC Public School has organized the school drive from March 1 from 8 to 3 p.m. at the school premises. These are some of the common example of the school magazine. But if we are conclude the second, here we just given the introduction of the chief guest. Please read it out, and then we have in the end how we can help in the initiatives of the environment conservations and all these things. Here's the end of the report. And the next is that recently your school held a seminar on the conservation of the water as a part of the World Water Day celebration. As a school pupil means the students, leader of the Marigold School Gurgaon, write a report on the 100 to 200 125. That means the report will be contain of 8 marks. So you are the Pritam and Priti. On the next slide we will get the answer. Here is the answer is given. So here, seminar on the conservation, water conservation, then right hand corner your name, and we have just given the date and the place name on the things, and then semicolons means the two dots on placing on the each other. So our school has organized this and this. कब किया था, इतनी तारीख को किया था, और हम ये रिपोर्ट कब लिख रहे हैं. जिससे आप यहाँ पे जो रिपोर्ट डालेंगे, जो डेट डालेंगे, वो आगे और पीछे होनी चाहिए. एंड इट मीन्स ये हमारी आज की करंट डेट होनी चाहिए, और जो ये वाली डेट होनी चाहिए वो हमारी पहले की डेट होनी चाहिए. राइट. So the main aim of this seminar was to aim us all about the need to save the government and the non-government organization is providing help. Water is precious. हमने इसमें वही सब किया कि किसने शुरू किया था, कब किया था, कहाँ किया था, कितने से कितने बजे था और कब था. और सेकंड लाइन में ये क्यों था, हमें इसमें वाई का आंसर हमें यहाँ मिल रहा है. इसमें हमें एम आंसर मिलने का मतलब है हमें वाई का आंसर मिल रहा है. राइट. Now here is the second page of this very thing, of this very report, and here is the last concluding paragraph. Now we have just come to the newsletter. Some of the student will ask, what is the newsletters? Newsletters are referring to the things we just come towards the it's a kind of report or the open letter. We just given the informal and the confidential news about a particular topic of interest to a special group, right? So कोई भी एक पर्टिकुलर ग्रुप स्पेशल ग्रुप होता है, उसके एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के लिए. फॉर एग्जांपल मैंने लेटर टू एडिटर में अपने बहुत सारी चीज़ों को लिखा है कि हमारे यहाँ जो रोड हैं या फिर हमारे यहाँ जो हेल्थ इन्वायरमेंट है, किस तरीके से हम अवेकन कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम मेंशन कर रहे हैं यहाँ न्यूज़ लेटर्स में. और आपको यहाँ देखने को मिल रहा है दैट आपने जो चीज़ें डाली हैं वो कहाँ डाली हैं, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में डाली हैं, आपने यहाँ राइट हैंड साइड में नहीं डाली हैं. तो ये फॉर्मेट भी ठीक है, बट ये फॉर्मेट हमारा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम न्यूज़ लेटर एक ऑप्शन के टाइप में कर रहे हैं. हमारा मेनली दो ही तरीके की रिपोर्ट राइटिंग आती है, दैट इज़ वन मैगजीन एंड अदर वन इज़ न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग. So here we have just done all these with the report writing, which are just important. We have just concluded all these things. So here is the end, and thank you so much for watching this. And the next video we will meet with another topic from our section. Thank you.